Hi friends, good evening. I'm Dr. Ashutosh Gupta, and kidney series में this is another case, right? So basically, what we know about the kidneys is this: that the kidneys they have to filter out the blood and they have to make the urine. तो मीनिंग देयर बाय है कि जितना भी प्रोटीन अवेलेबल है ब्लड में और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल है उनको सबका रीअब्जॉर्प्शन होना जरूरी है सो दैट जो यूरिन है यूरिन में वी आर नॉट लूजिंग द सॉल्ट एंड वी आर नॉट लूजिंग द प्रोटीन्स. So if we lose the proteins, it is called as a nephrotic syndrome. If we lose the electrolytes, it is called as salt-losing nephropathies. राइट तो एंटीनेटली भी जो कंजेनिटल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है या कुछ बार्टर सिंड्रोम हो सकते हैं उनके वैरायटी भी 1 to 6 वैरायटीज हो सकती हैं एंड वी कैन हैव अ रीनल ट्यूबुलर डिजीनेसिस which can present with the condition in which we identify that the baby or the fetal kidneys are not able to absorb the electrolytes. So meaning thereby है कि जो फुलनेस है जो किडनी है वो ज़्यादा फिल्टर आउट कर रही है ब्लड को और यूरिन ज़्यादा बन रहा है तो दैट वुड गेट मैनिफेस्टेड एज अ fullness in both the renal pelvises, and we would have more amount of urine being present in the ureters, therefore hydroureter will be there, and similarly we would have a polyhydramnios and a nicogenic kidneys. राइट अगर हमको फुलनेस या रीनल पेल्विस अगर हमको डायलेटेड मिल रही है तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो हम समझते हैं वो होता है पेल्विक यूरेटल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन विच वी कॉल्ड एज ए पूजो. राइट तो उसकी वेरिएबल सिविरिटी हो सकती है. लेकिन इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं पर भी पेल्विक और यूरेटर का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और चूंकि किडनीज में कैलेक्सिस होती हैं तो मेजर और माइनर कैलिसेस और पेल्विस की डायलिटेशन होगी. तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है so directly proportional to that obstruction, we would have the dilatation in the renal pelvis. We would have a major calyceal dilatation and we would have a minor calyceal dilatation, and that would get manifested in the kidneys as the fullness of the renal pelvis. But the liquor, जो fluid है बेबी के आसपास वो कम हो जाएगा because then the kidneys are not when the baby is not able to excrete, baby is not able to pass on that urine into the external environment. ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऐसा समझते हैं कि रीनल वेल्विस डायलेटेड है फुलनेस हमको मिल रही है यूरेटर्स भी डायलेटेड है और विज विज जो रीनल और कैलिसल कोई डायलेटेशन नहीं है सो क्लिनिकल पिक्चर वो पूजो की नहीं है पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की क्लिनिकली अल्ट्रासाउंड पिक्चर नहीं है एंड द लाइकर अराउंड टू द बेबी स्लाइटली ऑन हायर साइड देन प्रोबब्ली वी शुड थिंक समथिंग डिफरेंट and then probably we can talk about a salt losing nephropathy. We can have a Bartter syndrome, we can have dysgenesis, we can have a X-linked adrenal, even we can have a salt losing congenital adrenal hyperplasia, we can have diabetes insipidus also. So वो मैं एक केस आपको दिखा देता हूँ. इसको देखिए ये 26 वीक्स पे है. सो वी सी द रीनल पेल्विस. ये पेल्विस देखिए ये फुलनेस नहीं है, दे आर डायलेटेड. ये 13 मिलीमीटर की पेल्विस है विच इज देयर एंड देन वी सी कि ये यूरेटर्स आर आल्सो डायलेटेड ऑन बोथ द साइड्स. सो हाइड्रो यूरेटर है. ठीक है तो रीनल पेल्विस अपने आप में डायलेटेड है और 13 मिलीमीटर है ऑन वन साइड एंड समथिंग अराउंड 9 मिलीमीटर्स ऑन द अदर साइड एंड विद बायलेटरल हाइड्रो यूरेटर्स. Right, and then the amniotic fluid surrounding to the fetus is slightly on a higher side, and then we see that there could be mild echogenicity in the renal parenchyma. So the our suspicion, this is not a ultrasound or a clinical picture of a pujo pelvic junction obstruction नहीं है ये. This could be a salt losing nephropathy to the kidneys. fetal kidneys के बारे में हमको थोड़ा सा सजग या थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा सा ड्यू इम्पोर्टेंस टू द किडनीज हमको देना ही चाहिए. वाई बिकॉज ये सब एंटिटीज दे आर नॉट दैट अनकॉमन, right, but they are usually being missed, right. And so antenatally we can have a polyuria, you can have a polyhydramnios, you can have some element of an intrauterine growth restriction which you identify it to be a. so polyhydramnios के साथ में अगर वो IUGR मिल रहा है आपको then it should raise our tentacles कि ये this is not something to be taken lightly and casually. After the baby is born, the baby can have hyponatremia, hypokalemia, metabolic alkalosis. We can have a volume depletion. We can have a lot of issues to the baby, right? And genetically also, this can be an harbinger or could be a manifestation of the Bartter syndrome. Like I've told you, this could be an diabetes insipidus, could be an salt losing congenital adrenal hyperplasia, and renal tubular dysgenesis. So meaning thereby that antenatally
there are some armamentarium available with us so as to identify the renal functioning. How do we identify the renal functioning? Either you do a vesicocentesis, right? You put the amniotic, you put the needle directly into the fetal bladder and take out the urinary fetal urine and send it for a testing, in which we can do some sodium chloride, osmolality, and beta 2 microglobulin, which can definitely give us a fair amount of an idea about the functioning of the both the PCT and the DCT. Or otherwise, if the vesicocentesis is not being sort of, it is not that easy to do the vesicocentesis because the baby has to be supine, the bladder needs to be full enough so that we can, so meaning thereby that the access to the fetal bladder should be there. More so, the patient should also agree to this vesicocentesis. Amniocentesis can definitely be done, in which we can send it for a genetic evaluation. Moreover, we can do a fetal urine biochemistry in the amniotic fluid also. So that can give both the sort of, and we can see both the sides of the coin. We can, by doing the fetal urine biochemistry, we can definitely have a fair amount of an idea about the sort of a renal functioning. Vis-a-vis, we can send it for a genetic evaluation so as to identify that probably whatever genetic conditions that have enumerated, तो इनमें से कोई कंडीशन तो ऐसी अवेलेबल नहीं है. अभी काफ़ी सारे हमारे पास चीज़ें उपलब्ध हो गई है, लेकिन जैसे इस केस में हम 26 वीक्स पे हैं और थोड़ा सा जो हमारा जो टाइम है लीगल लिमिट का वो थोड़ा सा आगे निकल गया है, बट डेफिनेटली माय होल आइडिया इज नॉट टू मिस ऑन ऑल दीज कंडीशंस, राइट? सो ये दूसरी कंडीशंस है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि पार्शियल पोस्टीरियर वाल्व इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से वो धीरे धीरे किडनीज को कुछ नहीं कर देता है. सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी होने की वजह से भी बेबी उस यूरिन को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है और ब्लड में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ब्लड के उसको एब्जॉर्ब करने की बजाय उन्हीं को लूज कर रहा है. सो दिस कुड बी अ प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी और कुड बी सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी, राइट? और एंटीनेटली वी कैन डेफिनेटली make a fair amount of an idea or fair amount of an diagnosis about all these things by doing the invasive testing to the baby, right? Thank you very much for your patient listening.